जी। The first application under section 389, my lord. हाँ हाँ। The para 4, my lord. The allegation against the appellant, my lord, उसने उसके वाइफ के ऊपर मट्टी का तेल उड़ेल दिया और माचिस से आग लगा दी, बर्न इंजरी से उसकी डेथ हो गई है। जी जी ये दैट इज पैरा 4, माय लॉर्ड। जी। मार्ग जांच के दौरान केएस भूरी अनुविभाग अधिकारी पुलिस धनपुरी ने दिनांक 3/5/2013 को रेखीराम चौधरी राकेश हीरालाल इज वन ऑफ द विटनेसेस। PW6 पेज नंबर पीडब्ल्यू PW6, माय लॉर्ड, पेज नंबर 72 ऑफ केस डायरी। क्या कहते हैं वो? उसका ये कहना है कि डिग्री भी है क्या? ओरल डाइन डिक्लेरेशन। ओरल डाइन डिक्लेरेशन टू हीरालाल। जी सर। पीडब्ल्यू पेज नंबर 72। PW6 मैं हाजिर अदालत रुक जाइएगा। यस पीडब्ल्यू 6 पढ़ रहे हैं ना? यस मैडम। हीरालाल। हाँ, क्या कह रहे हैं हीरालाल जी? हीरालाल ये कह रहा है कि मैं हाजिर अदालत आरोपी को जानता हूँ। रितु चौधरी और राजकुमारी मेरी भतीजी लगती है। आज से 3-4 साल पहले की बात है। मैं मजदूरी करके वापस घर आ रहा था तो धर्मपाल घर के बाहर निकलकर हल्ला कर रहा था कि जल गया जल गया। फिर मैं जाकर देखा तो धर्मपाल की पत्नी राजकुमारी उर्फ रीतु जल गई थी। पूरा शरीर जल गया था। मैंने राजकुमारी से पूछा था कि कैसे जल गई तो उसने बताया था कि धर्मपाल ने मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगा दिया। इतना पूछकर मैं अपने घर भाग गया। जिस समय मैं राजकुमारी से बात किया था वो निर्वस्त्र थी और जली हुई थी। चूंकि वह मेरी भांजी लगती है इसलिए मैं अपने घर चला गया था। फिर राजकुमारी को कोतम अस्पताल ले गए थे। उसके अधजले कपड़े वहीं पर आपस में पड़े हुए थे। इस संबंध में मैंने शहडोल में मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ बयान दिया था। अनूपपुर अस्पताल में इलाज कराते समय रितु उर्फ राजकुमारी की मृत्यु हो गई थी। तो उसने ये कहा कि हम मुझको उसने कहा कि मेरे ऊपर मेरे पति ने मट्टी का तेल उड़ेल दिया और उस माचिस से आग लगा दी। नाउ दी क्रॉस एग्जामिनेशन में देखिए इसमें पुलिस ने मेरा कथन लिया था। पुलिस ने घटना दिनांक कन्फ्रंट कहाँ किया कथन से? कन्फ्रंट कहाँ किया 161 के बयान से? अरे भाई, कन्फ्रंट करना चाहिए था ना कि 161 के बयान प्रदर्शित इतने इतने पे अ से अ भाग पर ये लिखा है, ब से ब भाग पे ये लिखा और स से स भाग पे ये लिखा है। यू शुड हैव कन्फ्रंटेड दिस विटनेस। ये आपने नहीं बताया था कि आप जो मृतिका से मिले उसने आपको ओरल डाइन डिक्लेरेशन दिया। यू हैव नॉट कन्फ्रंटेड दिस विटनेस। अब बताइए, आपका बताइए, आपको कहाँ चोट लगी है? नहीं, इसमें डिफेंस विटनेस DW1 है। उसने ये कहा कि मैंने बचाती हुई पैरा 2 पे अबे दिया। धर्मपाल जी को इंजरी मार्क्स कहाँ है, थोड़ा सा बता तो दीजिए। यस मैडम। हैं? वही चिल्ला रहे थे ना, जल गया जल गया, यस मतलब आप भी जले और आपने यस। भी बुझाया, आपको भी लगी होगी चोट। हाँ, तो उसका डिफेंस विटनेस है, उसने एंटर हुआ है। फिटनेस से हो जाएगा? DW1 में दिया है। DW1 से हो जाएगा क्या कि आपको कोई दस्तावेज देना पड़ेगा अपना मेडिकल एग्जामिनेशन का? बट वो मेडिकल डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड में नहीं है, वो प्रेस ने किया। धर्मपाल चौधरी तो खुद ही एडमिट हुए, खुद ही घुसे विटनेस बॉक्स में। ये- हाँ, कहाँ है ये सब एविडेंस? ये मस्तराम, शांतिबाई, तिलक राम, ये लोग एग्जामिन हुए हैं क्या? नहीं, ये नहीं हुए। ये बोले 1.5 साल तक मैं बिस्तर में रहा हूँ। यस। कहाँ है वो पर्चे? कहाँ है वो पर्चे? वो डॉक्यूमेंट तो तो फिर कैसे रिकॉर्ड ये में एविडेंस प्लेस नहीं, पढ़ाई में आ जाएगी? तो डॉक्यूमेंट में ली। अरे भाई, 1.5 साल आप अस्पताल में रहे विद बर्न इंजरीज, फिर आपका डॉक्यूमेंट भी नहीं है, क्या करना है इसको? श्री अभिलाष कुमार। मतलब उसकी मैं PW6 में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसकी उसने ये कहा कि उसने उसके जाके घर में पूछा कि उसकी पत्नी ने बताया कि उसको मिट्टी के तेल वो माचिस से जला दिया और जल गई। बट उसके स्टेटमेंट में अगर आप देखें वो ये कह रहा है कि मैं अंदर गया नहीं। तो जब वो अंदर गया नहीं तो उसको आंगन कैसे में उसने कहा मैं आंगन में गया। आंगन वहां पर आंगन और उसके दस्तक घर आप में देखिए। काफी डिस्टेंस है उसमें। नहीं नहीं, कहाँ है नक्शा? स्पॉट मैप से बताइए क्या है। और आपने उससे पूछना चाहिए था क्रॉस एग्जामिनेशन में कि जब आप गए नहीं तो फिर जो है आपने घटना कैसे देख ली?
उसने बोला कि भांजी बिना कपड़ों के थी इसलिए चला गया। हाँ, नहीं 70 पेज नंबर 72 उसके पैरा लास्ट वाले पैरा में मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसमें हाँ। कि यह कहना गलत है कि रितु ने मुझे बताया था कि खाना बनाते समय जल गई थी। यह नहीं देखा कि आरोपी रितु को बचाते हुए समय जल गया था। ये कहना मेरी पुरानी रंजिश चलती है, ये कहना गलत है। देन उसके ऊपर मान लो उसे कह दिया मैं घर के दरवाजे पे खड़ा था, अंदर नहीं गया, ये सुनो और तो उसकी बात हुई है। और इसमें ये स्पॉट मैप देख लीजिए आप, दरवाजे के पास में ही है बिल्कुल, देख तो लीजिए घटना स्थल। 50 मीटर की दूरी पे बता रहे ऐसा हैं। कहाँ लिखा है इसमें स्पॉट मैप में? चलिए, ऑन मेरिट मर्डर। ऑन मैरिज यस लिखिएगा। दिस heard on IA 3279/24 an application for suspension of sentence. First application for suspension of sentence on behalf of the appellant Dharampal Chaudhary, son of Rikhi Ram Chaudhary. Full stop. Next para. Appellant is aggrieved of judgment dated 24/1/2012 passed by London Additional Session Judge / Special Judge Schedule in Sessions Case number 18/2014, whereby appellant has been convicted under section 302 IPC with life imprisonment and fine of rupees 10,000 with the default stipulation of 1 year additional RI. Next pair. It is submitted that as per the prosecution story, injured prosecution story, Dr. S.C. Rai, working at District Hospital Anuppur, had given a written complaint to the SHO Police Station Anuppur as contained in Exhibit P8 that Ritu Chaudhary, wife of Dharampal Chaudhary, aged about 25 years, was referred from Community Health Center Kothma on account of burn injuries. Full stop. She died on 30/4/2013 at 8:30 a.m. Full stop. Morgue was registered at 0. Thereafter, Shav Panchayatnama, etc. were prepared. Dead body was sent for postmortem, and thereafter, Morgue number 18/13 was registered under section 174 CRPC on 2/5/2013. Next para. During the Morgue investigation, statements of various witnesses were recorded. Full stop. Hira Lal Chaudhary, PW6, in his Morgue statements had stated that on Tuesday at about 11, he had heard cries from the house of Dharampal saying Jal Gai, full stop. When he reached the house of Dharampal, his wife Ritu Chaudhary was on fire, full stop. When Hiralal asked Ritu as to how the incident took place, then she gave a statement that her husband Dharampal had poured kerosene oil and had lit the matchstick. Full stop. This fact was narrated before the magistrate under 164 statements, and thereafter on 4/5/2013, a 5-liter kerosene can containing 100 grams of kerosene oil and a matchbox was recovered from the house of Rikhi Ram Chaudhary. Full stop. Besides this, some burnt matchsticks, 3 broken bangles, 1 empty 180 ml country liquor bottle, certain clothes smelling of kerosene, etc. were seized, and
seized at the instance of Ricky Ram Chaudhary and spot map exhibit P21 was prepared. Full stop. Next para. In Murg investigation, it was found that Dharampal Chaudhary had put his wife Ritu Chaudhary on fire by pouring kerosene and lighting a matchstick, as a result of which case crime number 145/13 was registered at Police Station Jaipur under section 302. Matter was investigated, charge sheet was filed. Matter was committed to the Sessions Court, where Sessions Court convicted the appellant as above. Next para. Learned counsel for the appellant submits that testimony of Hira Lal cannot be accepted to be a valid dying declaration, as there are some contradictions in his testimony. Full stop. Reading from the cross-examination, it is submitted that PW6 Hira Lal admitted that he was standing in the courtyard and had not gone inside the house. Full stop. Thus, it is pointed out that probability of deceased giving an oral dying declaration gets blurred in view of the testimony and cross-examination of Hira Lal. Next para. Shri Ajay Tamrakar, learned public prosecutor, in turn submit that there is a categorical statement that on hearing the cries, this witness had gone to the house of Dharampal. He had seen Dharampal coming out shouting. Full stop. He has categorically stated that deceased had informed him that she was put on fire by her husband by pouring petrol and lighting a matchstick. Full stop. This witness has not been confronted either with section 161 statements or 164 statements. Full stop. When these facts are taken into consideration, then it is evident that prima facie there is a oral dying declaration which has remained unrebutted throughout. Full stop. Same stand has been taken by PW6 Hira Lal. Full stop. Full stop. There is another important aspect which is required to be dealt with, that appellant examined himself as DW1, and as a defense witness he stated that he too had sustained burn injuries and was taken to district hospital Shahdol. Full stop. Doctors had said that he will not survive, and then he was brought back to home, where he continued to remain on bed for 1.5 years and was under treatment. But none of these statements have been corroborated by any independent witness or by filing any medical documents to show his admission in district hospital Shahdol or treatment being given or taken at any hospital or at home. Therefore, we are of the opinion that even the LEB taken by the appellant is not made out, and therefore IA fails and is dismissed.